one of the big contender of this cricket tournament, KFC Kodikal, and especially the bowling department is really outstanding in that the match. Gori Young Boys, I think Karna, the captain himself, is not playing in this semi-final. It's not a good news, being the captain of the side, missing the matches like this semi-final prestigious tournament like YUVARATNA Trophy 2022. The captain Karna is not playing in this semi-final, and Pratap got a chance here because he's missed out Sneha Malamar earlier morning, and because of that Pratap has got opportunity to play here for Gori Young Boys. Wait and see and the result of this match, and it's going to be the start of the semi-final. And from the far end, as always, Ansar will go into start the proceedings, and Taufik will go into face his first delivery. Power play over. Right, Mohammad wickety bounce. This time Taufik went for the off drive, missed it completely. Wicketkeeper behind the stump collects the ball. Lot of pain here for Arshad. Maybe he collects that ball almost in the ground level, and certainly sometime it's going to be very pain because the hardness of the ball may be the difficult for wicketkeeper behind the stump. This time he went for the big shot, not quite getting hold of that one properly, but still he managed to get that one into mid-wicket region. And before Arshid from the deep wide-ish long on to come across towards the mid-wicket region, ample time for Taufik to get the single. And cricketers Mangalore has got a first run of the semi-final. So far, both the teams really played a very good game of cricket. And cricketers Mangalore as well as Gori Young Boys, they deserve this place in the semi-final. And a little bit luck in the favor of NM cricketers Mangalore because they got a walkover when Young Surwa not really reported in a time, so that NM cricketers Mangalore managed to come into the semi-final. This time again, swept that one down to mid-wicket region, and just a single here for Riaz. Riaz is also off the mark. The intention is clear here from both the batters. They knows that how important to get some runs in the power play overs. So they're just trying their level best to get some big strokes in this power play overs. So far, Ansar bowled a very, very tidy line for time in this over. Right about the wicket. This time he's lofted. I don't think he got enough batter to that. The fielder there in the deep extra cover making no mistake at all. Shishant, the fieldsman there in the deep extra cover, takes a very comfortable catch. The wicket number 1 of NM cricketers Mangalore is back into pavilion, and again Ansar producing a vital breakthrough here for Gori Young Boys. Taufik just tried to break the shackle as he wanted to get some big stroke in this particular over of the Ansar, the over number first of the power play. But he just wanted to play that one away from his body, lofted that one, didn't got enough bat onto that, timing is not proper, and the ball is landed inside the boundary line down at deep extra cover region. 2 for the loss of 1 wicket. The new batter just walking towards the middle with the jersey number 21. From the far end, Ansar. Riaz this time not quite getting hold of them properly, but ball running out to the deep cover point position, boundary for 4 runs. Oh my goodness, can you believe this? It's not like it's a convincing cricketing stroke here from Riaz, but still look at that, the way the ball is travelling down to deep cover point region. Unbelievable boundary for Riaz. Just like he is just cutting the wood in an axe, and it doesn't look like he's making any stroke there. But still, look at the way the ball is traveling. That shows the hardness of the ball, and even the power of the batter. He's putting a lot of power behind that one. That's why he got this time bowler's back dry. Off chance here for Ansar on his follow through to take the catch. A quick reflection catch. The opportunities missed out there by Ansar, driven back powerfully by Riaz, and a little bit Ansar reacted late to hit, and ball just passing his trying hands, and got a single here. 7 for the loss of 1 wicket after completion of 1 over. The good start for both the teams, and 1 wicket for Gori Young Boys. At the same time,
NM Cricketers Mangalore got a 7. That's one boundary which really make the difference here. NM Cricketers Mangalore, they got 7. Must be satisfied to see. It's always going to be a good score, 7 in the first over. Ansar, quite unfortunately, is bowled well. It's bowled very good line and length, but 7 runs is conceded. From the commentary box, and it's going to be a start of the over number 2. Afridi done a great job in the previous match for his team, and he's justifying his presence in the playing 11 of Gori Young Boys. Even he playing his first match in this UCG cricket ground for Gori Young Boys, but he looks like most matured bowler for Gori Young Boys. And wait to see how well he's going to bowl in the big semi-final against one more big team, NM Cricketers Mangalore. Riaz is on strike. Afrid is on action. From the commentary box, and short mid off, short cover point, short backward point, short third man, short fine leg, short square leg, short mid dedicated, deep wide-ish long on, and one at the deep extra cover. Here is Afrid, right up over the cricket balls, bowled with a big wide. The same start what he got in the previous match. So he starts with some wides, but straight away is back with some good deliveries. But wait and see what will he going to do in this particular match. Far away outside the line of off stamp, wide signal by umpire, 8 for the loss of 1 wicket. After taken back to his bowling mark, short run up, pass umpire wake of challenge bowler. So far did a great job along with Roland Pinto and Shiraj in this particular day. Right up over the wicket, balls this time quicker one, try to turn that one in the onside region, didn't got enough bat on the chance of run out there, appeal for run out, umpire Roland Pinto asking for the third umpire. I think it's the first third umpire call in this particular day. Roland Pinto refers for the third umpire, and quite interestingly this is the first reference given by the field umpires for the third umpire to see whether it's out or not out. It's going to be very, very interesting. It's going to be a very close call for third umpire, and nothing much bother about that, because the technicians, the cameramans, and those who are in a mixing department of King Sports so far done a great job in this particular cricket tournament, and wait and see what the result is going to be. Gori Young Boys certainly wanted to see the red light. At the same time, supporters of NM Cricketers Mangalore wanted to see the green light. And not out is a signal coming from third umpire. The batsman is safe. Rifan is a new face in the playing 11 of NM Cricketers Mangalore. Different kind of the grip holding over his bat. Look at that one, X. And in the present day, so many the batters holding that kind of grips. Now Afraid bowling away from us. Right arm over the wicket. The Rifan drives that one, not quite getting the timing behind that one, but still managed to get the single down to short third man region. With the addition of that single, scoreboard moves on to double figure 10 for the loss of 1 wicket. Lot of invention in nowadays in cricket, and especially the stroke making is concerned. Some invention is from some cricket from batters to get some runs on the board. That was really required in cricket. Always you cannot believe with the orthodox cricketing strokes. Some invention is required. Then this time a quicker one, absolutely quicker one there from Afrida, so that Riaz couldn't manage to pick his line and length. The ball just passing his legs. So rightly so, umpire Wake not interested to call any decision here. That was a fair delivery, just passing around the legs of the batsman, well within the reach of the batsman. 10 for the loss of 1 wicket. Afraid bowling away from us with a short run up. He's got a lot of pace in his bowling. This time he's lofted, not quite getting hold of that one, but ball looks like it's carried to the fielder at deep extra cover. Shishant, the same fielder who got a catch of Taufik. Now he's picking up the catch of a very dangerous batsman, Riaz. Just tried to pose that one. I already mentioned Afrid has got a very, very good pace in his bowling. Against his pace, looking for the big shot, asking for trouble. He hit that one, he forced that one, being the fact that that was a quicker one. And happy faces here for fans of Gori Young Boys, and more than in right of my
commentary box. One more happy face is none other than Nandan Kulshekar, the big follower of Gori Young Boys. 10 for the loss of 2 wickets. Now Mansoor came into middle. Right time he came into middle because experience so important in this situation for NM cricketers Bangalore. Someone like Mansoor to come and play a responsible innings and knew to give some guidance for the youngsters as well when they were playing a big semi-final like there's a prestigious cricket tournament like YUVARATNA Trophy 2022. This time again, look at that one, absolutely perfect. Happy for the cotton ball, everything is going up here. The wicketkeeper Arshad, look at this level of confidence, is going up and saying that that was a fair catch. Umpire Vivek is not convinced, but now squad umpire Roland Pinto will going to have a conversation with the umpire Vivek. Now it's given as a third umpire for the cotton ball. Looking at the body language of Gori Young Boys, especially the closing fielder, just I want to see that because that ball came very quickly to the batter Rifan. Rifan tried to whip that one off his toes, but we have to see that whether the ball is involved is bat. If it is involved, whether the ball is taken with the pull, whether the ball is got a bounce in front of his boot or not, whether it is taken in the pull or not, that's what umpire have to see and third umpire have to see. But I think it's going to be a very difficult one, especially the technology. Of course, everybody knows that it was advanced in international level, but we are having a limited technology what we have here. But in this limited technology, you have to get the result here. The not out says by umpire. Thank you very much. Sriraj as the third umpire got the right decision here, just examining the replay of this particular delivery and got a right decision. And as it is, after that ball is grounded and then ball is went to the hands of Afridi. So no damage done. 10 for the loss of 2 wickets. And Afridi again bowling with a short run up. Right arm over the wicket he bowls. This time again straight to the hands of pace man. Shivaraj making no mistake at all. Again look at that one, beaten by the pace. Just a single word for that delivery. Beaten by the pace. You cannot implement your power against the pace. The technique is one of the best weapon to implement. Timing is so important. If you try to pose when the ball is coming very quickly to you, it's little time for you to react. And that's what really happened to the two players of NM cricketers Mangalore. I already mentioned this bowler Afrid has got a lot of the pace in his bowling. He got the ability of bowling quicker deliveries. And once if you try to pose that ball, and very difficult to you to get the timing behind the stroke. Again that wicket for Aprid, and what a tournament is having from the ball for Gori Young Boys. So 2 overs completed, a completion of over number 2. NM cricketers Mangalore, just like they're in the previous match, just struggled. Here also they're struggling. 10 for the loss of 3 wickets. Now Atif came into middle. One more big ace in the pack of NM cricketers Mangalore. Of course they missed out one big ace in the pack, that is Asif Adur. The fact that he is represented for his home team, Foster Adur, they already came into the finals of this cricket tournament. Now, Atif need to play some responsible innings along with his senior partner Mansoor. Will going to face Ansar from the far end. Right arm of the wicket, pedal that one, ball is in there for a while, but it was safely landed down to deep fine leg region before the square leg fielder run across to his right to field the ball. Ample time for Mansoor to get the single, then with the single scoreboard moves on to 11 for the loss of 3 wickets. So far, Gori Young Boys enjoying their bowling, especially in the particular cricket tournament when this tournament is dominated by the batters, but here is Gori Young Boys bowlers really creating problem for each and every team, opponent team they faced. Answer from the far end. Right arm of the wicket, Thief is went for the sweep shot, lucky there.
That ball not really coming to bat in relegation, not really hitting his bat, but I think one of the softest part of the body is involved in here, getting a little bit pain as well. Again went for the reverse hip. Again the dotted delivery. So far Ansar doing a fantastic job in this over, just like what Fafridis did, and even the first over also. He's bowled very well. Considered 7 runs. In that 7 runs, 1 boundary which is came from the bat of Riaz. Otherwise it's a quiet over. Ansar bowls. This is Mati. Went for the reverse hip. They're going up. They're going up. Ashar is very confident, but umpire is not confident enough to raise his finger. This is a good cricket, absolutely good cricket. More than good umpiring, I want to say, because this is not an easy job for umpire to judge. Definitely it's not an easy job. When, especially in under-arm cricket, it's a very difficult judge because the ball is coming all along the carpet. The batter is coming across, try to play the reverse sweep. Sometimes it's very difficult to see where the ball is hit, whether the ball is hit the handle, whether the ball hits his legs or any part of the body. Umpire have to see very carefully, and the good judgment in the end here from umpire Roland Pinto. Again now one more single, try to work that on onside region, but ball is went to different area down to long off region, and with that single scoreboard moves on to 12 for the loss of 3 wicket in the over number 3 in progress. Quiet cricket is going on. Pin drop silent in USAJ cricket ground. Again, experiment too much in the relegation there for Mansar. Too far right down the leg stump. Mansoor just following that one. He knows that that's a wide delivery, but more than the wide, Mansoor wanted to hit that one out of the park. Just that's why he's just chasing that ball. And Mansoor may be trying for the slower delivery in the relegation. That's why that ball far down went far away down the leg stump. Wide signal by umpire. 14 for the loss of 3 wicket. Answer from the far end. Right arm over the wicket he bows. This time delicately played. Just opening the face of the bat. Just giving a direction towards gully division by Atif to pick the single before the Pratap run across the field. The ball. One more good over there from Gori Young Boys. Even Answer bowled a very good over. 3 overs completed after completion of over number 3. NM Cricketers Mangalore searching for the right track. 15 for the loss of 3 wicket. Run rate exactly 5 runs per over. So start of the over number 4, and wait and see how Atif will going to implement here. Strategy, the game plan to get some runs. Didn't got that much of runs in the 3 overs, but still they got a 4 overs. They can bounce back at any time with someone productive over. Now wait and see. Afrid in the last over has been outstanding and very impressive in his bowling. The line and length. Afrid balls away from us. Right arm over the wicket. Reverse sweeping that one quite nicely down to deep backward point and fielder there. The deep running hard in front. And because of that fielder, Shashant is a very good Ansar in fact is a very good in the outfield. Against his throwing hands, I think it's asking for trouble if you're coming back for a second. He's a very good fielder. He's got a very good arm as well. Fields the ball very quickly, returns the ball very quickly. And no question of second run. 16 for the loss of 3 wicket in the over number 4 in progress. Afridi again bowling from the commentary box end with a short run up. Pass umpire Vivek to Mansoor. Mansoor just using his feet again, not quite getting hold of that one properly. He's tried to use his feet, and of course the batsman who can play over-arm cricket as well, they can use the feet very well. You can see that even the ball is bowling with a great deal of pace in that ball, but still Mansoor is using his feet very well. Just try to get into the line of the delivery and couldn't manage to get the timing behind the stroke. 17 for the loss of 3 wicket. Here is Afraid. The improvisation, a good piece of fielding there by the fielder Pratap,
one more good fielder is added to the fielding department of Gori Young Boys. Is a very quick fielder. Usually is a very good wicket keeper behind the stumps as well. But as the fact that Ashad is behind the stump is doing the job, he stands at short third man region, fields well, very well. Just a single for Atif, 18 for the loss of 3 wicket. Afraid again. Bowling with a short run up. Right arm over the wicket. This time again the quicker one. Absolutely quicker one. Beaten by the pace. This is what I'm talking about. The Fayaz is a good bowler. Especially in the power play overs what Gori Young Boys has got. They missed out the service of him because he's represented 5-star Adur. Now in his place they got a very good replacement in the name of Afridi. He's also got a lot of pace in his bowling. Again that ball is almost coming into the batsman very quickly, and Mansoor completely missed out that ball from his bat. Again Afridi bowling with a short run up, right arm over the wicket. This time he's lost it. This time he got that one right from the middle of the bat. Absolutely, it was a glorious stroke there from Mansoor. This is the first time I'm seeing that the bowler is bowling that one in the half volley. This is a fuller line delivery. He cannot stop Mansoor when you're getting that fuller line delivery, especially the batsman who deal with some overarm cricket as well. Definitely they will go and hit that one very straight down the ground to get the distance right. So 24 for the loss of 3 wicket. Much required 6 here for NM cricketers Mangalore. Again that was a big one. Chance of run out, directed. Bowled out. I want to see whether it's a bowled out or a run out. It's a run out. Bowled out. The bails are off. It's a bowled out. Beaten by the pace of Afrid. And what a good comeback there by Afrid. After immediately the Mansoor hits the 6. Next ball. He hits a stump with the pace in his bowling. Absolutely right on the block hold. And Mansoor is back into pavilion. 24 for the loss of 4 wicket. Look at his bowling figure of Afrid. I want to see his bowling figure. He bowled 2 overs, is no maiden, conceded 12 runs, and he picked up a 3 wickets, Gopi, and just exclude 1-6 from that, which is Mansoor hit the 1-6 down to deep, straight long off region, and just exclude that 6. Definitely, it's going to be a fantastic over. But more than anything else, Gopi, after that he conceded that 6. Immediately he picked up a wicket of Mansoor. That was a good sign of good bowler. That means he's definitely going to be the future bowler for Gori Young Boys. बिल्कुल सतीश, और वो छक्का को अगर एक्सक्लूड करके देखा जाए तो निस्संदेह बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर आफरीद ने की है. वो एक ढीली गेंद उन्होंने फेंकी था. हालांकि ढीली गेंद भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि गेंद गुड लेंथ पर थी, लेकिन पोजीशन जो था मंसूर का एक्सक्विजिट, और मिडल ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट किया. जिस तरीके से गेंद के लाइन पर बल्ले को लाते हुए काबिल तारीफ है. तो यहां पर जैसा कि आपने फरमाया अफरीदी ने उस छक्के के बावजूद सिर्फ 12 रन 2 ओवर में दिए, 3 विकेटें उन्होंने प्राप्त किए. और निस्संदेह जैसा कि आपने कहा उसके जरिए अफरीदी इस वक्त साबित कर चुके हैं कि वो भविष्य में एक बेहतर गेंदबाज बन सकते हैं. तो यहां पर 4 ओवर के खेल के बाद कुछ हद तक संभल चुका है. आरंभिक धीमी शुरुआत के बाद एनएम मैंगलोर 24 रन जोड़ चुका है 4 विकेट के नुकसान पर. 3 ओवर का खेल यहां पर बाकी, और देखना यह है कि इन बचे हुए 3 ओवर में एनएम मैंगलोर के बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते. फिलहाल आतिफ की उपस्थिति उनके लिए बेहद इस वक्त जरूरी है. बाएं हाथ राउंड द विकेट स्वीप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ, इंप्रोवाइजेशन, और गेंद इस वक्त फाइन लेग पर बेहतरीन तरीके से रोकी गई है वहां पर. और इस 30 रन के लिए बल्लेबाज दौड़ना चाहते हैं, फिसल गए और इस बार थ्रो को रिसीव करने में असफल. आधे मैट पर तक, आधे पिच तक दौड़कर आ गए थे इस वक्त बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर के तंजीम, लेकिन वापस लौट गए और थ्रो को ठीक तरह से रिसीव करने में वहां पर असफल गेंदबाज. और इस बीच बल्लेबाज इस गेंद पर सुरक्षित अपने स्वस्थान पर वापस लौट चुके हैं. तो 26 रन 4 विकेट के नुकसान पर, और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार. गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए अरशद की गेंद, ये गेंद रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ इंप्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को इस वक्त निकाला है बैकवर्ड थर्ड पर सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए. तो यहां पर बेहतरीन स्ट्रोक
आतिफ के बल्ले से लगता हुआ ही जस्ट प्ले दैट वन विद द ट्विस्टेड बैट, और आतिफ के पास वो काबिलियत है कि वो अंडर प्रेशर बल्लेबाजी कर सकता है। और यहां पर देखिए किस तरीके से उन्होंने तिरछे बल्ले के साथ विद द ट्विस्टेड बैट गेंद को खेला था बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर, और वो उन्होंने पहले ही गैप को भांप लिया था कि डीप बैकवर्ड थर्ड मैन और डीप थर्ड मैन के बीच जो लंबा अंतर है उस अंतर पर उस अंतर के जरिए रिवर्स शॉट के जरिए अगर गेंद को निकाला जाए तो निस्संदेह चौका उनके पक्ष में आ सकता है। इस बार एक बार फिर से फाइन निकालने में सफल, इस बार काफी स्कोरर, लेकिन फील्डर इस वक्त थर्ड मैन पर मौजूद और एकमात्र रन इस बीच बल्लेबाज को मिलेगा। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 31 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं, जहां तक एक बेहतर स्कोर एनएम क्रिकेटर्स के खड़ा करने का सवाल है, आतिफ की उपस्थिति उनके लिए इस वक्त बेहद जरूरी है। बाएं हाथ राउंड द विकेट, अरशद की गेंद फ्लाइटेड, अंदर की ओर आती हुई गेंद, रक्षात्मक तरीके का खेलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, गेंद लाइन के बाहर टिप्पा खाई थी और अपील को सही तरीके से नकार दिया अंपायर ने। हालांकि बल्ले का भीतरी किनारे टकराया था, ही स्कोर्ड इनसाइड एज ऑन दैट, और एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर। इट्स 32 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। निस्संदेह बराबर का टक्कर इस वक्त जारी, और अरशद बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद आतिफ के लिए, गॉन फॉर अ माइटी हीव दिस टाइम, नॉट सक्सीडेड, शॉर्ट फाइन लेग फील्डर चूके, और इस बीच दोबारा जब तक वो अपने दूसरे प्रयत्न में गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका है 33 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पांचवा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर, और एक बार फिर से अरशद गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गेंद सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल, फील्डर काफी पीछे, लेकिन कवर पर फील्डर मौजूद है, थोड़ा सा स्कोरर, लेकिन गेंद को जब तक वो फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और 5 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है 34 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। नाउ आई थिंक NM cricketers recovered well after being a slower start. Now the present run rate is now progressing here for them exactly 6.80 runs per over. And still they got 6 wickets kept intact, और 12 गेंदें यानी 2 ओवर का खेल अब उनकी पारी में बाकी। नौफल के हाथों में गेंद और तंजीम इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। शाम का वक्त 4:50 यहां पर बच चुके हैं, और देखिए अगर आप मैदान के चारों ओर नजर फिराते हैं तो आपको दर्शक ही दर्शक इस वक्त नजर आएंगे। एब्सोल्युटली जंप पैक स्टेडियम जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, रविवार की शाम को मैदान पर मौजूद ये खचाखच भरे दर्शक और रंगीन यहां पर बनाते हुए, और एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला युवरत्ना ट्रॉफी 2022 के अंतर्गत एक शानदार प्रगति यहां पर करती हुई पहला इस बार स्वीप किया, गेंद पहुंची इस वक्त मिड विकेट पर। कहना पड़ेगा गेंद को उछाला था अंतिम क्षण में थोड़े से सफल होते हुए, लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत और भुगतान उन्हें करना पड़ा। डीप मिड विकेट फील्डर ने कोई गलती नहीं की, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका। तंजीम की पारी समाप्त, 5वां विकेट गिर चुका 34 रनों के ऊपर। इट्स 34 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। और जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है तो मैं कहूंगा कम से कम 50 का आंकड़ा यहां पर एनएम मैंगलोर को पार करना होगा, अगर उन्हें गोरी यंग बॉयज के बल्लेबाजों पर दबाव बनाना है जब वो बल्लेबाजी पर उतरेंगे। और यहां पर सर्व प्रयत्न करते हुए एनएम मैंगलोर के बल्लेबाज अपने टीम की कुल रन संख्या को 50 के पार ले जाने का। और जहां तक सवाल है बेहतर स्कोर का, तो आतिफ की उपस्थिति पारी के अंत तक एनएम मैंगलोर के लिए बेहद जरूरी है, और आतिफ अपना लय रिदम लगभग प्राप्त कर चुके हैं, और देखना यह है कि वो आने वाले गेंदों में किस तरह की बल्लेबाजी यहां पर करते हैं। और नौफल इस वक्त तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट, परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद, आतिफ ने करारा स्ट्रोक लगाना चाहा, चूंकि अरशद ने विकेटों पर निशाना दागा, ओवर थ्रो के रूप में दूसरा रन पूर्ण कर चुके हैं, कोई बैकअप नहीं वहां पर, 2 रन मिलेगा, लेग बाय का इशारा। 36 now for the loss of 5 wicket. Absolutely fantastic match is now going on here. Second semi-final of YUVARATNA Trophy 2022, which proudly presented by Team Fortune Mangalore. और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो नौफल इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए आतिफ के लिए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछाला, लॉन्ग पर, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद। गेंद को सफल होते हुए ऑन साइड पर उछलना चाहते थे, लेकिन मैं समझता गेंद बल्ले के टॉप एज पर टकराने के बाद इस वक्त गई थी लंगोन पर, और यहां पर लंगोन के फील्डर ने कोई गलती नहीं की, तो आतिफ का बेशकीमती विकेट यहां पर गिर चुका है, और यहां पर दबाव कुछ हद तक बढ़ चुका है एनएम मैंगलोर के ऊपर। 36 for 6 and 5 overs completed and 6th over in progress in their innings.
So the man is now comes out to the middle as a number 8 batsman for NM Mangalore is Ayaz. He is now slowly walking towards to the crease. तो जब कैच लिया गया था दोनों बल्लेबाज क्रॉस ओवर कर चुके थे, तो इस वजह से इस वक्त जैद सामना करने के लिए तैयार और फील्डिंग में जमावट यहां पर करते हुए नौफल इस वक्त एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए दाहिना हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी इस वक्त करेंगे। ये गेंद करते हुए इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन के दिशा में गेंद पहुंची और जैद के बल्ले के बाहरी किनारे से टकराने के बाद और जब तक गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 37 रन 6 विकेट के नुकसान पर 37 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। लॉन्ग ऑफ को थोड़ा सा वाइडर इस वक्त तैनात किया जा रहा है। कवर पॉइंट फील्डर को थोड़ा सा स्क्वायर यहां पर बुला लिया गया है 20 गज के दायरे के अंदर। कवर पॉइंट फील्डर को कोई डीप कवर पॉइंट नहीं और यहां तक सवाल है थर्ड मैन का, तो डीप थर्ड मैन यहां पर क्रीज पर मौजूद। लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा वाइडर, लॉन्ग ऑन इस वक्त मौजूद। डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग ठीक सीमा रेखा के पास तैनात दाहिने हाथ के बल्लेबाज अयाज के लिए। तो नौफल एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट लेग स्टंप से बाहर दिशाहीन गेंद। दिस इज नॉट अ राइट बॉलिंग, दिस इज नॉट अ गुड बॉलिंग एट दिस सिचुएशन। और तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में 2 रन यहां पर प्रदान कर चुके हैं गेंदबाज और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 39 रनों पर। 39 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस फॉर एनएम मैंगलोर। और नौफल इस भी तैयार था ना तो ओवर द विकेट जैद के लिए ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया। इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए एकमात्र रन इस बीच बल्लेबाज को मिलेगा, इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता। और इस 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 40 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। इट्स 40 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। What a fantastic match is now going on here। और नौफल परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद शफल होते हुए थोड़े से गेंद को इस वक्त स्कूप कर दिया था डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर बल्लेबाज ने और 1 रन दौड़कर इस बीच दोनों बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। 6 ओवर की समाप्ति 41 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर्स स्कोर्ड बाय एनएम मैंगलोर विद द करंट रन रेट ऑफ जस्ट अंडर 7 रन्स पर ओवर। एंड नाउ लास्ट ओवर रिमेनिंग इन द इनिंग्स, अंतिम ओवर का खेल बाकी और देखना यह है कि इस बचे हुए अंतिम ओवर में उनके बल्लेबाज बचे हुए 4 विकेटों की मदद से और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। शाम के 5 यहां पर बचते हुए अगर ठीक तरह से कहा जाए तो 4:55 यहां पर बच चुके हैं। धूप का कहर जरूर कम हो चुका है इस मैदान पर, लेकिन धूप का अस्तित्व जरूर मौजूद। सूरज मैदान की दाईं ओर अपना अस्तित्व का प्रदर्शन यहां पर करता हुआ धीरे धीरे समंदर की ओर अपना सफर तय कर चुका है। और इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ मैदान पर रोशनी भी यहां पर कम होती नजर आती हुई। घने वृक्षों की परछाइयां जो सीमा रेखा पर है, सीमा रेखा के बाहर जो घने वृक्ष हैं उनके परछाइयां धीरे धीरे पिच की ओर पहुंचती हुई इस बात का संकेत देती हुई कि इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ मैदान पर रोशनी भी कम हो रही है। कुल मिलाकर द्वितीय सेमीफाइनल मैच इस युवरत्ना ट्रॉफी 2022 इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ, जिसका शानदार तरीके से प्रस्तुति कर चुके टीम फॉर्चून मैंगलोर। और इस बीच गेंदबाज इस वक्त तैयार, अरशद की गेंद, पहली गेंद लेग से बाहर, निशाना इस वक्त दागा लेकिन काफी वाइड थ्रो। 2 रन मिलेंगे, 1+1 2 रन एडेड टू द टोटल। तो काफी अतिरिक्त रन यहां पर गोरी यंग बॉयज के गेंदबाज प्रदान कर चुके हैं और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 43 रनों पर। अरशद एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए और इस बीच कुछ हद तक फील्डिंग में तब्दीली करते हुए मिड ऑफ फील्डर को कुछ हद तक आगे बुला लिया गया है और एक्स्ट्रा कवर और गली शॉर्ट फाइन लेग और मिड विकेट यहां पर मौजूद। अरशद की गेंद, ये गेंद हल्के से गेंद कौन साइड पर खेलना चाहा, गेंद गई शॉर्ट थर्ड मैन पर, बल्ले का नहीं पैरों पर टकराने के बाद अंपायर का इशारा लेग बाई का। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 44 रनों पर। इट्स 44 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स इन द ओवर नंबर 7th एंड द लास्ट इन प्रोग्रेस एट द स्टार्ट ऑफ द 7th ओवर इन फैक्ट। और गेंदबाज एक बार फिर से ये गेंद, इस बार गेंद को साइड पर मोड़ना चाहा था, सफल होते हुए गेंद स्टंप्सों पर टकराई, बोल्ड ऑफ हिज लेग्स और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। 44-7 अयाज की पारी समाप्त। अब सिर्फ 4 गेंदें उनकी पारी में बाकी। जस्ट 4 balls नाउ रिमेनिंग इन देयर इनिंग्स।
फैजल का आगमन होता हुआ एज ए नंबर 9 बैट्समैन फॉर एनएम मैंगलोर, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाज अरशद की गेंदों का एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट किंग स्पोर्ट्स द्वारा इस वक्त किया जा रहा है। अब इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस श्रृंखला का सीधा प्रसारण देख सकते हैं यूट्यूब पर, और एक बेहतरीन टीम वर्क इस वक्त किंग स्पोर्ट्स के सदस्यों द्वारा इस वक्त किया जा रहा है। फलस्वरूप एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट हम यहां पर देख रहे हैं यूट्यूब पर। यह गेंद बेहतर गेंद थी, इस वक्त बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और स्कोर बोर्ड यहां पर रुक चुका है। 44 रनों पर 7 विकेट के नुकसान पर यह गेंद अरशद की हल्के से गेंद को स्वीप कर दिया। पैडल स्वीप गेंद जाती हुई बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, फीडर वहां पर मौजूद। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, सिर्फ 1 रन क्लीन कलेक्शन, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 45 रनों पर। 45 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स इन द ओवर नंबर 7 in progress, 7 and a last in progress in fact। 2 गेंदें अब बाकी उनके बारे में। जस्ट 2 balls now remaining in the innings। अरशद ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ निकाला, एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा की ओर, बेहतरीन फील्डिंग वहां पर। गेंद को यहां पर रोका गया है अपनी दाईं ओर दौड़ते हुए, लगभग 7 से 8 कदम, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। ऑफ द बैक फुट गेंद को पंच किया था, एक्स्ट्रा कवर फील्डर एनफील्ड क्लियर करते हुए एक्स्ट्रा कवर से ऊपर से डीप एक्स्ट्रा कवर पर, और 2 रन बल्लेबाज बट हो चुके हैं। 47 द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। अंतिम गेंद लेकर उनकी गेंदबाज इस वक्त अरशद तैयार, ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में, आसान सा रन आउट यहां पर होता हुआ, और इसी के साथ द स्टिपुलेटेड ओवर्स हैज बीन कंप्लीटेड in NM Manglore's innings. They finished with 47 for the loss of 8 wickets in the stipulated 7 overs, and now the target for Gori Young Boys is 48. And as far as the required run rate is concerned, exactly 6.86 runs per over they have to score for victory. With the help of 10 wickets, the present equation shows for them 48 runs they have to score in the stipulated 7 overs to qualify for the mega final of The 2 over of the power play. At the same time, Gori Young Boys, if they wanted to win the match, they wanted some productive over, first 2 over of the power play. And Deepak has got a capability of getting some productive over for Gori Young Boys. And wait and see, Gopi, the level of competition between these 2 teams. But I think, Gopi, both the teams has got a potential of winning this match, has got a potential of coming into the big semi-final of a big final of this cricket tournament. So, from the commentary box, and Mujib, as always, starts with the power play over from the commentary box, and bowling right arm over the wicket to Deepak. Deepak down the leg stump going to be wide. This is one area, Gopi, they have to be very strict, because they're not really depending 50 plus run. They're depending just 48 runs for the opposition. So they have to restrict these extras. Always, whenever there's extras, the batsman definitely going to get some confidence back, because they get extra runs, they get extra deliveries as well. And Mujib again bowling away from us. Right arm over the wicket, pass umpire to Deepak. Deepak across the line of the net, swinging his bat. Ball is in there for a while. They go, everyone is going up, but more than anything else, looks like just an excitement. First they appeal for leg before wicket, Gopi. When you are appealing for the leg before wicket, then how it's going to be a catch? That's a simple question, isn't it? When you are appealing for, but that is a part of cricket, because they have to appeal for everything. This is the rights. They have to appeal for everything. But first here is to say that bowler appeal for leg before wicket. Umpire says not out, and next then ball went in the air, and short third man region fielder takes a catch. Now umpire calling for the third umpire, and it's definitely going to be a difficult job. And wait and see, well, will it going to be out or not? If it is a ball is involved with the bat, then ball hits the boot going up, and certainly definitely NM cricketers Mangalore will going to get a big wicket here. If it is bat is not involved, I think Deepak will be safe. But umpire, third umpire, Sriraj once again is experience will go into tested here, along with the technicians of King Sports, and wait and see what could be the result. But whatever the result, but both the teams definitely, the NM cricketers Mangalore wanted to be the third umpire will go to give out. At the same time, the fans, the followers, the teammates of Gori Young Boys wanted to see that Deepak will be safe here. But for that, I think it's going to be a
the decision of umpire is going to be key. And anyhow, Gopi, the out or not out, but certainly the result is going to be more interesting. And NM Cricketers Mangalore, if the decision is going in favor of NM Cricketers Mangalore, then I think gate certainly will be open a little bit for NM Cricketers Mangalore. At the same time, Gori Young Boys doesn't want to lose this man, Deepak. He is a man in form. He is a man who got 43 runs in one innings. He got some runs in the two matches as well. And Gori Young Boys also doesn't want to lose Deepak. बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने कहा, और यहाँ पर डिसीजन अगर एनएम क्रिकेटर्स के पक्ष में जाता है तो बहुत ही बड़ा उनके लिए सफलता यहाँ पर कहलाएगा, बहुत ही बड़ी सफलता कहलाएगी, क्योंकि दीपक इनफॉर्म बल्लेबाज है इस श्रृंखला में। उनका विकेट अगर गिरता है तो निस्संदेह दबाव गोरी यंग बॉयज के ऊपर आ जाएगा, और दीपक का विकेट अगर गिरता है तो दबाव में इस वक्त गोरी यंग बॉयज आ जाएगा और आने वाले बल्लेबाजों पर काफी हद तक दबाव रहेगा। और दीपक को निश्चित रूप से दीपक को खोना नहीं चाहेगी गोरी यंग बॉयज, क्योंकि दीपक एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो करारे स्ट्रोक्स खेलने की क्षमता रखते हैं, खासकर पावर प्ले ओवर में एक लंबी पारी खेलने की भी क्षमता रखते हैं। इस श्रृंखला के एक मैच में सिर्फ 18 गेंदों में 42 रन उन्होंने बनाए थे, खासकर मेरे ख्याल से मंगला देवी क्रिकेटर्स के खिलाफ। और निस्संदेह यहाँ पर वो अपना लय प्राप्त कर लेते हैं तो निस्संदेह गेंदबाजों पर भारी पड़ने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पर दीपक का विकेट दोनों टीमों के लिए जरूरी है। विकेट उखड़ता है तो विकेट गिरता है तो एनएम क्रिकेटर्स के लिए बेहतर होगा, अगर विकेट बचता है तो गोरी यंग बॉयज के लिए बेहतर होगा। Absolutely. Now the not out decision coming from our umpire Sriraj, and very difficult, Gopi. If you go to the international the matches, the technology is so much advanced. They will have sneakers to find out whether the ball has got the bat involved or not. They got a sneakers. Then we'll going to get, of course, a ball has got contact with the bat. But here, very difficult to get. And Sneeko, it's called the Sneeko, and definitely it's going to be a very difficult in a limited availability of the technology here to get that bat involved or not. And certainly it's a benefit of doubt always going into the favor of a batsman. And the right decision there from umpire, third umpire Sriraj, and he won the field umpire as well. From the commentary box, and right arm Mujib bowls to Deepak. Again a little bit down the leg stump, try to transfer one side, ball is running down define leg division, but fielder is very quick in the negation, so that batter have to settle for the single. With that single, scoreboard moves on to 2 on the board. I think in this situation, Gori Young Boys have to battle for each and every runs, because NM Cricketers Mangalore, they doesn't want to lose here. They definitely knows that it's very important for them to come back into winning track. They wanted at least one title here in this season if they wanted to back in this season, and that's why they're taking that match is very seriously. And at the same time, I request NM Cricketers Mangalore, please don't waste the time. As per the request of the organizer, they wanted to finish the match as soon as possible, and totally in this particular tournament, every teams are really cooperative with the organizer as far as finishing their overs within 30 minutes. The 7 overs they have to complete. Within 30 minutes they have to complete. And I once again request captain of NM Cricketers Mangalore, please cooperate with the organizer. And again from the commentary box end, Mujib, right arm over the wicket to now fall. Now fall this time, drags that one, try to hit that one on the onside region, miss it completely, wait for the umpire signal, it's a bye. Wicket keeper behind the stump, missed the ball completely from his hand. Frustration for the bowler, frustration for the captain of NM Cricketers Mangalore. So with that single, scoreboard moves on to 3 on the board without loss of any wicket. Three for the loss of, with 3 without loss of any wicket. 45 more runs required for the victory. Mujib from the commentary box, and right arm over the wicket balls. This time lofted, Deepak doesn't quite hold up that one properly. Oh, luckily that ball is didn't really carry to the fielder at Deepak Sekawa. Ayaz, the fieldsman there, the Deepak Sekawa tried his level best to take that catch, but ball just falling short of that fielder. Look at the frustration from the fielders of NM Cricketers Mangalore. And Deepak's really dealing with some luck here, and let us see how well he able to convert that luck into one very good innings for his team, Gori Young Boys. 5 without loss of any wicket in the over number first in progress. Mujib again bowling with a short run up. Right arm over the wicket
to Deepak. Deepak swinging his bat, but a lovely delivery there from Mujib. Know exactly what Deepak will going to do this delivery. He knows that Deepak is a very aggressive batsman. He wanted to dismantle him. He wanted to get some big shot from his ball. That's why the ball little bit away from the bat of Deepak, outside the line of off time with a pace in his bowling. And Deepak completely missed out that delivery again. This time again going for the expansive try, not quite getting a hold of that one. Proper chance of run out there in the non-strikers and overthrow coming up. A good backup there, the fielder. And just one run for Deepak in that occasion. A tied over. Absolutely, it is a very tight over there for Mujib. Just 6 runs coming from that over. So after completion of over number 1, it's 6 without loss of any wicket. And Gopi, 48 is the target. 6 is a first over. I think it's a much better over. Seeing the fact that Naufal and Deepak, the two very good dangerous batsmen, are in the middle. Keeping these two batsmen quiet means only Mujib can do that kind of the bowling performance for NM Cricketers Mangalore. बिल्कुल ऐसी गेंदबाजी सिर्फ मुजीब ही कर सकते हैं सतीश, और दीपक और नौफल जैसे बल्लेबाजों को पावर प्ले में खामोश रखना उतना आसान नहीं है। और मैं समझता हूँ पहले ओवर में मैं यकीन के साथ कहूँगा कि पहले ओवर में मुजीब ने अपनी काबिलियत के अनुसार गेंदबाजी की है। अब रहा सवाल दूसरे गेंदबाजों का, तो देखते हैं दूसरे गेंदबाज अब गेंदबाजी पर उस छोर से लगाए जा रहे हैं रियाज। तो देखना है कि मुजीब ने जिस तरीके की बल्लेबाजी यहां पर की है, क्या रियाज भी उसी तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। अगर रियाज भी उसी तरीके की कसी हुई गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजों पर दबाव डालते हैं, तो निस्संदेह दबाव बल्लेबाजों पर आएगा गोरी यंग बॉयज के ऊपर। देखते हैं इस ओवर में उनकी पारी में क्या होता है। Absolutely, Gopi. And meanwhile, ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೋರ್ವ ಆತ್ಮೀಯರು Manoj Mugrodi, one of the best wicketkeeper batsmen who represented Friends Bowl for a long time. So warm welcome Manoj for this wonderful cricket tournament on behalf of cricket lovers and on behalf of organizers. So coming back to this match, Gopi, exactly you are mentioning about this match is now certainly going to be very interesting because of that first over which is bowled by Mujib. It's a very quiet one. Of course, he didn't got the success, but I think more than the success, he managed to put some break on the run rate. Now, equation 36 balls remaining. They have to get another 42 runs to win this match. Go with that 6 difference between the run and ball. I don't think it's going to be a big difference in the present cricket. And but they have to increase that difference for NM Cricketers Mangalore if they wanted to win the match. From the far end, Riaz, right arm over the wicket. Bounce. Deepak going for the off drive. Wicketkeeper behind the stump. Not really up to the mark. Not really up to the mark. Frustration for the bowler. By signal umpire Roland Pinto. The warning number 1 has been given to the batsman, not for the bowler. And the batsman Deepak got a warning from umpire Deepak there. You need to be very careful when he was running between the wicket because there is no other excuse if he goes on continue that mistakes. And we will see 7 without loss of 1 wicket. The wicket keeping is one of the important part of cricket sometimes because each and every run is very crucial in this big semi-final. You cannot give that kind of runs very cheaply for the opposition like Gori Young Boys. And NM Cricketers Mangalore realized that, and frustration now for the captain of NM Cricketers Mangalore. Riaz taking his own time, is setting each and every delivery, is setting a field from the far end. Riaz. So already it's a 50 minutes for this match. This is the over number 2nd in progress. Appeal for leg before wicket. They're going for the run. Chance of run out in that occasion. Directed required. But the fielder missed the wicket but hitting Naufal in the occasion. Leg by call by umpire. 1 more addition to total. With the addition of that single scoreboard moves on to 8 on the board. And 50 minutes means Gopi. It was actually 30 minutes, 60 minutes. Almost a 2 innings time. It is just a 2nd in progress. This is not a good to see. The time concept is very important. The punctuality is very important in cricket. And I think I once again request both the teams make it past NM Cricketers Mangalore as well as Gori Young Boys. 8 without loss of any wicket from the far end. Riaz with a short run up. Right arm round the wicket past the umpire Roland Pinto. To Deepak lofted. Oh, that was a ball high up in the air. Deep extra cover fielder takes the catch.
This is certainly a lucky wicket here for an M cricketers Mangalore. Look at the reaction of Riaz. He put two hands his head. He thought that the ball is gone out of the park. But the fact that Deepak didn't really got that one right from the middle of the bat. And he played that one very high up in the air. That's why he didn't got the distance right. But it's definitely going to be a lucky breakthrough for an M cricketers Mangalore. The wicket of Deepak is back into pavilion. बिल्कुल सतीश, पहले जिस तरीके से दीपक ने गेंद को उछाला था तो तुरंत गेंदबाज रियाज ने अपने सिर पर हाथ धर लिए थे कि शायद गेंद सीमा रेखा के पार चली जाएगी, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को काफी ऊंचा उछाला था और स्ट्रोक्स में पर्याप्त दम नहीं था कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके और गेंद काफी ऊंची उछलने के बाद लंबा फील्डर द्वारा लपक ली गई और यहाँ पर दीपक का विकेट गिरना निस्संदेह गोरी यंग बॉयज के लिए यहाँ पर ड्रॉबैक साबित हो सकता है, क्योंकि दीपक इनफॉर्म बल्लेबाज इस श्रृंखला में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन बल्लेबाजी के जरिए दिया है और यहाँ पर उनका विकेट गिर जाने के बाद अब स्ट्रेट अवे दबाव गोरी यंग बॉयज के ऊपर. Absolutely, Gopi. The pressure straight away on to Gori Young Boys. Suddenly, because they lost the wicket of Deepak, the man in form from the bat, one who got a 43 plus runs in one innings. Certainly, they will going to they will going to feel some pressure here. But these two batsmen can the pressure off because they got ability. The batsman like Naufal, and now the new batsman came into middle, Ashad. One more very good striker of the ball. Fantastic left-hand batsman is in non-striker end. Riaz from the far end. Right arm over the wicket, bounce. Oh, left it. Beautifully played that one. No need to run for that. One bounce over the row for 4 runs. Outstanding cricketing stroke, Gopi. This is now staying. Nothing much wrong with the line of the delivery. Ball is outside the line of off-time. Even the ball came along the carpet. And look at that, the way he hit that ball, just it looks like he's cutting the wood from the axe, and that was a fantastic, absolutely it was a magnificent stroke there from Naufal. He's one of the danger batsmen as far as the opposition NM cricketers Mangalore is concerned, especially when you're playing the big matches like semi-final and quarter-final and the final. Gopi, Naufal is always delivers his best. That's a good sign of good players. They're the one they're playing under pressure games. They love to play under pressure games as well. And now for look at that one, absolutely fantastic that was. I want to see it again and again because that was really going to delightful to watch that kind of cricketing stroke, especially when Naufal hitting right from the middle of the bat. Now he's got a protection in the deep backward square after seeing that stroke from Naufal. 12 for the loss of 1 wicket from the far end. Riaz. Right arm over the wicket, bounce. Shuffled across the lineup. Looking for the improvisation. Chance of round out there. Oh my goodness. Both the batsmen are in the same end. Naufal back into pavilion. Total misunderstanding between the wicket, costing a huge wicket for Gori Young Boys. And NM cricketers Mangalore, they got one more huge wicket, Gopi, in the name of Naufal, because the previous delivery hit the 6. Very next ball, unfortunately, is back into pavilion, and I think it's definitely going to be a disaster for Gori Young Boys. बिल्कुल सतीश, पहले पिछले गेंद पर चौका झड़ने के बाद कुछ हद तक आत्मविश्वास भरे नजर आ रहे थे नौफल, और अगली गेंद पर उन्होंने गेंद को सफल होते हुए स्वीप करना चाहा था, लेकिन गेंद विकेट कीपर के हाथों से चूकी गेंदबाज के बल्ले को वंचित करने के बाद। और जहां तक का सवाल है, विकेट कीपर के हाथों से जैसे ही गेंद छूटी, बल्लेबाज नौफल रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन जब तक उन्होंने जाना कि गेंद वहीं पर है, गेंद पर फील्डर लपक रहे हैं, उन्होंने वापस लौटना चाहा और नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज ने 2 कदम आगे जरूर बढ़ाया, लेकिन ये देखते हुए अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिए कि वहां पर फील्डर गेंद तक पहुंच चुके हैं, तो नौफल को यहां पर वापस लौटने का कोई मौका नहीं। और नौफल का विकेट का पतन निस्संदेह गोरी यंग बॉयज को परेशानियों के दलदल में और ढकेल चुका है। Exactly, Gopi. That definitely Gori Young Boys now started to feel the pressure because 2 very good batters are back into pavilion in the form of Naufal and in the form of Deepak. Now all up to these 2 batsmen. So they are the very experienced campaigner for the side of Gori Young Boys. Shivara just came into middle. Man who's got 100 in this particular cricket ground, and now I think he's the one who can take the match away from the opposition. Along with the Ashad, they need to play some responsible innings. So far, I think Riaz is did the damage here. He got a 1 wicket, 1 in the form of run out, but altogether it's a very good over for NM cricketers Mangalore. From the far end, Riaz with a short run up, right arm over the wicket, bounced
Shivraj just stepped that one quite nicely down to square leg region. Good fielding there by the fielder at square leg, quickly moving towards his left and fields the ball, and over number 2 is completed. After completion of over number 2, Gori Young Boys chasing 48 to win this match, searching for the right track, still struggling in the middle. 13 for the loss of 2 wicket. Now straight away equation that I want to see, Gopi. 13 for the loss of 2 wicket. I request NM Cricketers Mangalore to make it fast because they have to finish this match early. We have to play another big final. So 17 minutes you took to bowl 2 overs. You took 17 minutes to bowl 2 overs. This is not a good sign to see because the 4 minutes, I think it's as per the rules and regulation of the cricket is concerned, you have to finish 1 hour and 4 minutes. That means 8 minutes you have to complete 2 overs, and you took already 9 minutes extra. And this is the time of the 4 overs, and that's what to see, Gopi, because the organizer they will definitely feeling some pressure because they have to finish the match, the final, within before the dark taken place. Everybody knows that after 6:30, it's very difficult to organize the big, and each and every spectators want to see that the final will be of 7 hours. Not lesser than that. That's very important in cricket, Gopi. That time sense is very important. So I request once again NM Cricketers Mangalore to make it past, and 13 for the loss of 2 wickets. Still there 35 more runs required for the victory from the community box, and right arm over the wicket, Muji balls straight away. This is a technically very sound player. Look at that one, the way he is get the placement right down to cover point and backward point region. Shivraj, he is really the best player in this situation for Gori Young Boys especially, and he and Ashad, the left and right combination. Definitely, Gori Young Boys not really that much of pressure here if they're able to build the partnership. The partnership is which is more important for Gori Young Boys, and 14 for the loss of 2 wicket. 35 more runs required for the victory. Mujib bowling with the short run up. Fielding change here. Deep third man, deep backward point coming little bit square towards the deep cover point region. The mid on going back to deep short mid wicket region. Long on is there, long off is there, deep backward square leg is there. One fielder at wide long off. Ashat is on strike. Mujib. ದಯಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. NM Cricketers Mangalore. 14 for the loss of 2 wicket. Mujib bowling away from us. Right arm over the wicket. This time lofted. I don't think he got it middle of the net. Fielder is underneath it. The danger man departs. NM Cricketers Bangalore got a big wicket here again. Ashad, the back into pavilion. And now suddenly, Gopi, the more pressure now for the Gori Young Boys, because I know the new batsman coming to the middle. Definitely they have to see that they have to build a partnership, and at the same time they have to increase the run rate as well. The required run rate is creeping up. The wickets are tumbling as well for Gori Young Boys, and now NM Cricketers Mangalore looks like they're suddenly slowly back into this game. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर अरशद का स्ट्रोक जो था, देखिए किस तरीके से टॉप एज पर गेंद टकराई थी, हवा में उछली थी. अरशद छक्का लगाना चाहते थे, जो दबाव उनके ऊपर बढ़ रही थी उस दबाव को कम करना चाहते थे, और यहाँ पर डीप बैकवर्ड को लेग फील्डर द्वारा लपक लिए गए. और अब एक बार फिर से इक्वेशन की ओर नजर फिराते हैं. 34 रन और चाहिए, 28 गेंदें बाकी, 28 बॉल्स टू गो एंड 34 मोर रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री. और मैं समझता हूं यहाँ पर कमबैक करने का मौका जरूर है. सेंसिबल क्रिकेट यहाँ पर अपनानी होगी, मैं समझता हूं. और शिवराज जैसे बल्लेबाज यहाँ पर क्रीज पर मौजूद है, उनको एक साथी की जरूरत है. और प्रताप, जो कि उनका इंक्लूजन इस मैच में किया गया है, और प्रताप भी एक बेहतर बल्लेबाज जाने जाते हैं. और अगर एक साझेदारी यहां पर बनती है, हर गेंद पर रन कम से कम सिंगल्स भी है, 2 बल्लेबाज बनाते हैं, तो निस्संदेह यहां पर गोरी यंग बॉयज इस मैच में वापस आ सकता है. फिलहाल तख्ता कुछ हद तक इस वक्त एनएम मैंगलोर का भारी लगता हुआ. Absolutely, Gopi. Look at the performance of Mujib. It's outstanding today. His bowling picked up some very important wickets for his team this time again. Look at the delivery. Absolutely, there's a lot of pace in his bowling. But I want to see the decision from umpire. Will it go into a bye? Yes, it is a bye. And one more frustration for Mujib there. Big wicket keeper behind the stump, not really able to collect the ball. One more addition to total. Score put Muzan to 15 for the loss of 3 wickets. Another 33 more runs required for the victory for Gori Young Boys. Nothing much worried about this total, Gopi, because everyone knows that this is ball is almost hard in the nature. Ball is really coming to the bat very well,
And one single partnership, the partnership for 15 to 20 runs, which is badly required for Gori Young Boys if they wanted to win the match. But NM Cricketers Mangalore doesn't want that partnership. That's why they're picking up wickets in a pre-cricket intervals. Pratap, as just like my friend Gopi is mentioning about the inclusive of Pratap, will going to strengthen the batting department of Gori Young Boys. There's no doubt at all. He's a very cool customer. As cool as deep waters of the lakes, calm lakes, and he's very cool and calm. But he's got ability of building up the partnership. He's a kind of batsman who loves to rotate the strike, and in the middle of that singles, Gopi, he got the ability of hitting some big shots as well. Again, Shivaraj chipping ball down to short coverage, and they're looking for the second. In comes the throw, and they completed a couple of runs. Excellent running the wicket. I think the full marks goes to Pratap in this occasion, Gopi, because Pratap is calling Shivaraj for the second. Pratap quickly realizing that Mansoor is charging into the ball, missed the ball completely from his hand, and he quickly realizing that the fielder from the deep cover have to run front, so ample time here to come back for the second. Good judgment of the run, and scoreboard now 18 for the loss of 3 wicket. 30 required for the victory. The over number 3 in progress. Mujib so far is balled very good line and line, very tidy line and line. Improvisation, a lovely shot, but again, it's not really getting that much of speed. I'm really surprised, Gopi, but once the ball is got contact with the Shivaraj, looks like the ball is quickly passing there, but maybe that ball is got a extra bounce in that occasion, so that the fielder from short third man quickly went to the direction of the ball, fields the ball. One more single is added to total scoreboard now moves on to 19 for the loss of 3 wicket. Now, equation 29 more runs required for the victory, and they got 24 deliveries, and Gopi, it's just a 5 difference. Will you believe that this difference is going to be a very big difference in this condition for Gori Young Boys? Of course, they lost wicket 3. Still batting to come. This 5 difference, I think, in this situation, I don't think Gori Young Boys will feel a much pressure than NM Cricketers Mangalore. They wanted some wickets, they wanted some economical over. बिल्कुल जो डिफरेंस है कुछ ज्यादा नहीं है. जब पारी की शुरुआत गोरी यंग बॉयज ने की थी तब वो फासला 6 का बरकरार था. 42 गेंदों में 48 रन बनाने थे. अब फासला लगभग वहीं तक बरकरार है. 1 कम हो चुका है, 5 का फासला है. और मैं समझता हूं यहां पर सेंसिबल क्रिकेट की ही जरूरत है इस वक्त गोरी यंग बॉयज को. और क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज यहां पर एक सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हैं. हर गेंद पर कम से कम लेकिन सिंगल्स उन्हें बटोरना होगा. और जहां तक एनएम मैंगलोर का सवाल है, इस वक्त जो ये फासला है बचे हुए गेंद और बनाने हुए रन के बीच का 5 का, इस फासले को उनको बढ़ाना होगा. न सिर्फ डॉट गेंदों के जरिए उस फासले को बढ़ाना होगा, उस डिफरेंस को बढ़ाना होगा, बल्कि विकेटें भी उन्हें यहां पर उखाड़ने होंगे. यहां पर कुछ हद तक स्लाइट बिट ऑफ तख्ता इस वक्त एनएम मैंगलोर का भारी लगता हुआ, लेकिन एक बेहतर साझेदारी निस्संदेह गोरी यंग बॉयज को सही मंजिल की ओर अग्रसर कर सकती है. Exactly, Gopi. NM Cricketers Mangalore, maybe the looks like they're in the upper hand by picking up 3 wickets. This is a big mistake there from Atif. Each and every extra definitely going to release the pressure from the batsman. This is not a good start there from Atif. He balled a big wide, and everybody thought that it might not only the wide, it will going to defeat that short third-man fielder as well. It's going to be a 1+5. It's going to be 1+4. It's 5 runs. It's definitely going to be a match out of the hands of NM Cricketers Mangalore. But the fielded here by the short third-man fielder, luckily, and the scoreboard now is a 21 for the loss of 3 wicket. Now, it's going to be very interesting now. 27 more runs required for the full toss delivery, and Pratap already mentioned he's a cool and calm customer, but that much of cool and calm is not required. And Gopi, juicy full toss in that occasion. Everyone thought that it might be Pratap will go in to hammer that one down to mid-wicket region. Maybe there's a weapon of Atif. He's quite deliberately balled that full toss, Gopi, just tempting the batsman to go for the big shot, and he was able to pick the wickets. And Pratap did manage. Oh, ball him, clean him up. Shivaraj is back into pavilion. That's the wicket what NM Cricketers Mangalore wanted here, but not the captain of Gori Young Boys. Everybody, we are talking about Shivaraj, Gopi. He's a very experienced campaigner, and we are talking about if the Gori Young Boys wanted to win the match, this man have to play the sheet ankle role. But in this position, in this condition, difficult condition, losing Shivaraj means Gori Young Boys maybe they are on the back foot.
बिल्कुल शिवराज सेंसिबल क्रिकेट खेलने में माहिर है और यहाँ पर गेंद को उन्होंने हल्के से ऑन साइड पर मोड़ना चाहा था, मिडल ऑफ स्टंप पर गेंद थी, लगभग इस गॉट इनसाइड एज ऑन दैट आई थिंक सो, और ड्रैग डाउन टू द स्टंप्स। अंतिम क्षण में शिवराज ने गेंद को स्टंप्सों पर खींच लिया और शिवराज का विकेट का गिरना, जैसा कि आपने फरमाया सतीश, निस्संदेह गोरी यंग बॉयज के लिए एक बार फिर से ड्रॉबैक यहाँ पर साबित हो सकता है। हालांकि कुछ हद तक संभल चुका था प्रताप और शिवराज की साझेदारी से, और ये साझेदारी बन ही रही थी, ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर जम ही रहे थे कि यहां पर विकेट गिर चुका है शिवराज का बोल्ड आउट के रूप में। अब मैं समझता हूं दबाव वापिस गोरी यंग बॉयज के ऊपर गिर चुका है, लेकिन अभी भी मौका जरूर है। कुल मिलाकर अब गेंदें बाकी हैं 22 और रन चाहिए 26, 26 टू गेट फ्रॉम 22 डिलीवर्स, और फासला उतना कुछ ज्यादा नहीं है। और अभी भी एक साझेदारी अगर बनती है क्रीज पर आने वाले जो बल्लेबाज नए आए हैं और प्रताप के बीच, तो निस्संदेह गोरी यंग बॉयज वापिस अपने मंजिल की ओर अग्रसर हो सकता है। लेकिन यहां पर एनएम मैंगलोर की ओर से आतिफ ने यह विकेट उखाड़कर गोरी यंग बॉयज के ऊपर के दबाव को और बढ़ा दिया है। Exactly, Gopi. Now the pressure is off. At the same time, they just open the gate here for NM cricketers Mangalore. They can win the match if they are able to pick the wickets in a regular intervals. In each and every overs, they are able to pick the wickets. NM cricketers Mangalore can win the match. But the Gori Young Boys doesn't want to lose the wicket. They want to get some runs. So look at that one. That's what the beauty of cricket, Gopi. And whenever the settled batsman back into pavilion, whenever the new batsman coming into the middle, it's not so easy to handle the pressure, because each and every ball is a runs required for Gori Young Boys, and each and every dot ball will go into increase the pressure for the batsman. So Ashit, the new batsman, just came into middle, tried to play the sweep shot, missed the ball completely from his bat, and one more very important dotted delivery there for Matif. 22 for the loss of a 4 wicket. 26 more runs required for the victory. Atif from the far end, right arm over the wicket. One more wicket. One more wicket. I asked the fielder in the right position to take the catch. One more is a bad shot selection. It's not a good shot selection, Gopi. When you are required to get some get some partnership going, you are playing unorthodox cricketing stroke against the bowling of Atif. I think it's a bad shot selection and he pays the penalty for that. एग्जैक्टली सतीश, बैट शॉट सिलेक्शन था इस वक्त। गेंद को तिरछे बल्ले के सहारे इस वक्त खेलना चाहता है। अगर स्ट्रेट बैटेड भी खेलते तो सिंगल्स उनके पक्ष में आ सकता था, क्योंकि आतिफ की गेंदें कुछ ज्यादा टर्न नहीं लेती हैं, और यहां पर इस गेंद की लाइन को समझकर अगर स्ट्रेट बैटेड स्ट्रोक खेलते तो शायद स्ट्राइक रोटेट यहां पर कर सकते थे, प्रताप को स्ट्राइक मिल सकता था। लेकिन इस स्ट्रोक को वहां पर उन्होंने तिरछे बल्ले के सहारे विद ट्विस्टेड बैट खेलना चाहता, लेकिन मैं समझता अंतिम क्षण में गेंद कुछ ज्यादा उछाल एक्स्ट्रा बाउंस लेती हुई उनके टॉप एज पर टकराए और आसान सा कैच पहुंचा यहां पर शॉर्ट थर्ड मैन पर, और हर्षित का भी विकेट यहां पर गिर चुका है। अब मैं समझता हूं दबाव गोरी यंग बॉयज के ऊपर काफी बढ़ चुका है। Absolutely, pressure is on now. The wickets are tumbling here. Absolutely tumbling. I don't know why they are feeling that much of pressure, because the game is absolutely the pressure game. It's a semi-final, and just look at the Gopi. Why the players like Karna is missing this big games like semi-final. It's always is very important to have the players like Karna. When you are the captaining, leading your team, you are responsible to be in the team. And I think maybe there's missing some experienced player like Karna, and not playing the semi-final. From the far end, Atif will go into ball, and Sushant is one more very talented left-hand batsman came into middle, and wait and see how Sushant will going to contribute from his bat for his team. So far, Atif is really looking pretty good. He's on fire. Down the leg stump, going to be a chance here for the out. Direct, it might be the chance for one more wicket here for NM cricketers Mangle. But here, 1+1. 2 gifted runs here for Gori Young Boys. All kind of drama out here in the UCG cricket ground. Look at the crowd, Gopi. Absolutely fantastic to watch, isn't it? The jam-packed stadium out here in the UCG cricket ground. They are really witnessing one more good match here of YUVARATNA Trophy 2022, proudly organized by Team Fortune Mangalore in this most beautiful UCG cricket ground. So 1+1, 2 bonus runs here for Gori Young Boys. The scoreboard is 24. That means half of the job is completed. Now another half of the job is required here for Gori Young Boys to win this match. 24 required, 24 completed, 20 balls remaining. Full toss delivery. Pratap hoisted it over. Down to deep mid wicket for a 6. What a shot there from Pratap. Gopi,
You remember me or not? The previous one, when he got a juicy full toss, I told that not required that much of calm. Little bit aggressive is required. This time he got a full toss, and then he just sending me message. I am not that much of calm. I got ability of dispatching ball to mid wicket region, and that was absolutely a big mistake there from Atif. बिल्कुल सतीश, पिछले फुल टॉस गेंद पर फायदा नहीं उठा पाए थे प्रताप, तब आपने फरमाया था क्यों आपने इसका फायदा नहीं उठाया। लगभग वहां पर कुछ हद तक गलत लाइन पर खेल गए थे और गेंद फुल टॉस गेंद को ठीक तरह से समझ नहीं पाए थे, लेकिन यहां पर इस फुल टॉस गेंद को बिल्कुल पूरी तरह समझते हुए गेंद को इस वक्त कनेक्ट किया डीप मिड विकेट पर और फुल टॉस को कबूल करते हुए गेंद को इस वक्त डीप मिड विकेट पर खेल दिया 6 रनों के लिए और इशारों से कहा आतिफ से धन्यवाद। तो यहां पर आतिफ जैसे ही गेंद छक्के पर गए, आतिफ सिर पर उन्होंने हाथ धर लिया। अब 18 रन चाहिए 19 गेंदों पर। Absolutely, Gopi. Now it has 18 runs to get from 19 balls. The equation looks to be very, very easy now for Gori Young Boys, but cannot underestimate Gopi. Cannot underestimate the famous slogan in cricket: a small leakage can sink a big ship. Here, you cannot underestimate this 17 runs in 18 balls. And 12 runs came from that over, Gopi. He picked up 2 valuable wickets, but the fact that look at that, Gopi. We're talking about that. Look at the one big shot. One big shot, how it's going to be. One big shot is changing the complexion of the match. That's what you're talking about. The hardness of the ball. Hardness of the ball. That was maybe the big factor in this particular cricket tournament. And because of that, Gopi, maybe that was a full toss, juicy full toss. But he have to deliver, no? Of course, the full toss, but he have to deliver that one to mid wicket region, and he delivered that one in an important time. And just like you're mentioning, when Pratap came into middle, you told that inclusive of Pratap strengthening the batting department of Gori Young Boys, and he's proved that one. एग्जैक्टली सतीश, प्रताप इस वक्त साबित कर चुके हैं कि उनका इंक्लूजन कितना महत्व यहां पर रखता है। तो इस वक्त 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं 31 रन 5 विकेट के नुकसान पर। ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎನ್ಎಂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಈಗಾಗಲೇ 36 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ತಾವು ಎಸೆದಿದ್ದೀರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು। ಆದ ಕಾರಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ತಮ್ಮ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯ ಈ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। तो यहां पर सतीश बिल्कुल सही बात आपने फरमाया, प्रताप का इंक्लूजन कितना महत्व यहां पर रखता है ये उन्होंने साबित किया पिछले ओवर के अंतिम 5वें गेंद पर छक्का जड़ने के बाद। अब इक्वेशन सीम्स टू बी मच इजियर नाउ फॉर गोरी यंग बॉयज। 17 टू गेट फ्रॉम 18 डिलीवरीज, और यहां पर फील्डिंग में एक बार फिर से जमावट करते हुए डीप बैकवर्ड थर्ड मैन को इस वक्त तैनात किया गया है और गेंदबाज इस वक्त रियाज गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। देखते हैं इस गेंद पर प्रताप क्या करते हैं। 17 टू गेट फ्रॉम 18 डिलीवर्स, व्हाट अ मैच इज नाउ गोइंग ऑन हियर। और इस बीच रियाज ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए प्रताप के लिए ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, हवा में गेंद, लेकिन गेंद इस वक्त निकल चुकी है इनटू द गैप। गेंद जाते हुए अक्षय कुमार गेंद को फील्ड किया गया, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और 2 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। सो फैंटास्टिक रनिंग बिटवीन द विकेट। इस बार हल्के से गेंद को पुश कर दिया था, स्क्वायर ऑफ द विकेट। गेंद हमें में जरूर थी, लेकिन कवर पॉइंट फील्डर के दाईं ओर से निकलते हुए और डीप एक्स्ट्रा कवर पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। और प्रताप ऐसा कहना पड़ेगा यहां पर गोरी यंग बॉयज के लिए शीट एंकर्स का रोल यहां पर अदा करते हुए। जहां तक गोरी यंग बॉयज के विजय के उम्मीदें आशाएं बरकरार है, तो प्रताप की उपस्थिति इस वक्त उनके लिए बेहद जरूरी है। और तो जहां तक मैच टाई होता है, अगर मैच टाई होता है तो विकेट का कंपैरिजन यहां पर देखा जाएगा। और इस बीच अंपायर रुके हुए हैं और खेल भी कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है। और देखते हैं यहां पर अब चाहिए 15 रन विजय के लिए, जबकि गेंदें बाकी हैं 17। 15 टू गेट फ्रॉम 17 बॉल्स। ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಂ ತಂಡದವರಿಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ತಾವು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸಂಘಟಕರು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತಾವು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜಯಿಸಿದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 6 ಓವರ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು, ತಮಗೆ 5 ಓವರ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು। ನೀವು ಇನ್ನು
ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ತಮ್ಮ ಓವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. दो रन बन चुके हैं. अब 15 रन चाहिए और गेंदें बाकी हैं 15 to get from 17 balls. What a fantastic match is now going on here. गेंदबाज इस वक्त तैयार. इस बीच रियाज दाहिना हाथ ओवर द विकेट. गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए प्रताप इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. ये गेंद इस बार हल्के से पुश. सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल. गेंद के धीमेपन को पहचानते हुए प्रताप ने बल्ले और पैर के साथ आते हुए फॉरवर्ड शॉट लगी दिशा में गेंद को ढकेला और जब तक फील्डर पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का. स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर. प्रताप और सुशांत इस वक्त पारी की भागदौड़ को संभाले हुए. सुशांत नए बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और इस वक्त राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए रियाज. फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई और एक बार फिर से रियाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सुशांत के लिए और दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. फील्डिंग में एक बार फिर से जमावट करते हुए सुशांत सामना करते हुए इस वक्त रियाज की गेंदों का. ये गेंद रियाज की सुशांत के लिए. ये गेंद अच्छी गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला. कवर पॉइंट की दिशा में गेंद पहुंची. 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा. दूसरे के लिए दल पर थ्रो पहुंचा. मंसूर थ्रो को रिसीव कर पाए. करे जरूर. विकेटों पर भी उन्होंने गेंद को दागा. निशाना उनका टकराया लेकिन इससे पहले बल्लेबाज बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट द्वारा दूसरा रन प्राप्त कर चुके हैं. तो मैं समझता हूं अब गोरी यंग बॉयज फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर इनिंग्स दे आर लुकिंग ऑन टॉप. दे आर लुकिंग राइट ऑन टॉप नाउ. 12 to get and the ball is remaining 15 balls and 12 runs. What a fantastic second semi-final match is now going on here. Absolutely jam-packed stadium. रविवार की शाम को और रंगीन बनाते हुए दर्शकों से खचाखच भरा हुआ यह मैदान और दर्शक निस्संदेह रविवार की शाम को रंगीन यहां पर बनाते हुए. ये गेंद परिवर्तन के दौर पर धीमी गेंद. बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पीस ऑफ बॉलिंग. जस्ट चेंज ऑफ पेस और गेंद को इस वक्त खेल दिया बैक टू द बॉलर की दिशा में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. 14 गेंदें बाकी, 12 रन चाहिए. द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड्स. विजय के लिए कड़ा संघर्ष यहां पर जारी है और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार. रियाज इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट. बाएं हाथ के बल्लेबाज सुशांत के लिए गेंद रिवर्स शॉट इस वक्त खेल दिया खूबसूरती के साथ. गेंद निकलती हुई लेकिन गेंद पर ज्यादा दम नहीं. गेंद में ज्यादा दम नहीं और स्ट्रोक इस वक्त फील्ड की जा चुकी है. गली क्षेत्र पर 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका. 37 रन 5 विकेट के नुकसान पर और कुल मिलाकर 5वां ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर. अंतिम गेंद इस ओवर में बाकी. रियाज के 13 गेंदें बाकी, 11 रन चाहिए. 11 runs they have to score for victory in remaining 13 deliveries. और इस ओवर में अंतिम बार रियाज इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. प्रताप एक बेहतर पारी अपने टीम के लिए खेलते हुए और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रियाज की गेंदों का. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रताप के लिए अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद अच्छी गेंद थी. इस बार ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ निकाला. बड़ी स्लोवर पर फील्डर पहुंचते हुए क्लीन कलेक्शन इन कम्स द थ्रो इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर एंड बिफोर दैट द बैट्समैन हैव गॉट plenty of time to cross over for this single. 38 for the loss of 5 wicket. 10 runs to score from 12 deliveries. और सतीश निस्संदेह यहां पर गोरी यंग बॉयज अब उनका तख्ता भारी लगता हुआ. अब मैं कहूंगा एनएम मैंगलोर को कमबैक करने के लिए एक घातक गेंदबाजी इस ओवर में करनी ही होगी. Exactly, Gopi. It's going to be very decider over, more than the decider over for Gori Young Boys. I think it's a decider over for NM Cricketers Mangalore. They needed some very good over. Very economical wicket-taking over is badly required for NM Cricketers Mangalore. And more than that, I think, Gopi, I want to see how many wickets NM Cricketers Mangalore have lost. NM Cricketers Mangalore lost 8 wickets, Gopi, and Gori Young Boys lost 5 wickets. That means 3 wickets they are header than their opposition NM Cricketers Mangalore. That means, Gopi, required run is 10 and even they able to get at 9 runs. If the match is will going to tie and in the wicket average, I think Gori Young Boys definitely going to win this match. And that's so important here for NM Cricketers. Not only they want to get some economical over, at the same time they want to bowl some, want to get some wicket as well.
एग्जैक्टली सतीश, ये ओवर देखते हैं आतिफ के हाथों में इस वक्त गेंद है और देखते हैं जो मैजिकल गेंदबाजी की जरूरत है इस ओवर में वो किस तरीके की मैजिकल गेंदबाजी करते हैं। दाहिना ओवर द विकेट, पहली गेंद प्रताप के लिए, गेंद को इस वक्त खेलना चाहा, इस वक्त ठीक तरह से खेल नहीं पाए और गेंद पहुंची शॉर्ट कवर पर, बल्ले का निचला हिस्सा यहां पर टकराया था, बॉटम एज ऑन दैट और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 39 for the loss of 5 wickets, 9 to get now, 11 balls remaining. The pressure is now building up on both sides. Exquisite live telecast King Sports द्वारा इस वक्त किया जा रहा है YouTube के जरिए और यहाँ पर ये श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति करते हुए मैच जो कि इस वक्त दिलचस्प मोड़ पर आकर रुक चुका है। आतिफ फील्डिंग में इस वक्त जमावट करने के बाद एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज सुशांत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद सुशांत के लिए, गेंद को ड्राइव कर दिया, लंब ऑफ की दिशा में गेंद जाती हुई, 1 रन मिलेगा और क्लीन कलेक्शन वहां पर, हालांकि कुछ हद तक वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन जरूर था लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को उन्होंने फील्ड कर लिया और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 40 रन 5 विकेट के नुकसान पर, 40 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, 8 रन टू स्कोर, 10 बॉल्स रिमेनिंग और गेंदबाज आतिफ तैयार। ये गेंद इस बार फुल टॉस ऑफ द टोज, गेंद को इस वक्त खेल दिया डीप कवर पॉइंट पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, सेंसिबल क्रिकेट यहां पर अपनाते हुए प्रताप, वो जानते हैं हर गेंद पर कम से कम सिंगल्स भी बटोरते हैं तो उनके टीम को विजय तक पहुंचा सकते हैं और यहां पर एनएम मैंगलोर को चाहिए डॉट गेंदबाजी इस वक्त इस मैच में वापस आने के लिए। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल, वक्त की परिस्थिति को समझते हुए इस वक्त ये दोनों बल्लेबाज सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए स्ट्राइक रोटेट करते हुए और यहां पर 4 गेंदों पर 4 सिंगल्स बटोर चुके हैं और प्रताप एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर और इस बार गेंद निकल चुकी है फाइन लेग की दिशा में, थोड़ी सी मिसफील्ड वहां पर, शॉर्ट फाइन लेग फील्डर द्वारा दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और दूसरा रन यशस्वी पूर्ण कर चुके हैं। शॉर्ट फाइन लेग पर जो फील्डर खड़े हुए थे शायद उनके हाथों से टकराने के बाद गेंद निकली, इस वक्त अपने रफ्तार को खोती हुई जब तक फील्ड हो, शॉर्ट फाइन लेग पर गेंदबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। अब 4 रन चाहिए जबकि गेंदें बाकी हैं 7, 4 to get from 7 डिलीवरीज। अब ऐसा कहना पड़ेगा एक चमत्कारी गेंदबाजी ही एनएम मैंगलोर को इस मैच में वापस ला सकती है। इस ओवर में अंतिम बार आतिफ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर फ्लिक कर दिया, डिफ्लेक्शन, गेंद जाती हुई फाइन लेग सीमा रेखा की ओर और गेंद इस वक्त सीमा रेखा की अंदर जब तक फील्ड की जाए 2 रनों का इजाफा हो चुका है और इन 2 रनों के साथ गोरी यंग बॉयज नाउ ब्रॉट मोर नियरर टू द विक्ट्री, जस्ट 2 रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट ओवर और अंतिम 2 ओवर में मैच का नक्शा ही यहां पर बदल गया सतीश। Exactly, Gopi. Meanwhile, I request 5-star Addur. ದಯಮಾಡಿ 5-star ಅಡ್ಡೂರ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ 5-star ಅಡ್ಡೂರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಂತರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಲಾಗುವುದು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿಜೇತ ತಂಡದವರಿಗೆ 46 for the loss of 5 wickets. And absolutely Gopi, and sensible batting. Absolutely, it's a sensible batting from both the batsmen, and that's why always going to be a big problem, Gopi. Whenever it's a right and left combination, and definitely it's going to be a bonus for chasing team, because every time the bowler have to change the line and length when the strikes are rotated, and at the same time they have to change the field set as well. That's what they got advantage, and that's why I mentioned that this pair is going to be very crucial, left and right combination, and this is definitely going to become the bonus here for Gori Young Boys. But match is still not yet over, 2 runs to get for the victory, but 1 run is enough. I think if the match will going to tie without losing a wicket, Gori Young Boys definitely they are going to be the winners. एग्जैक्टली सतीश, और यहां पर 2 रन चाहिए अंतिम ओवर में, तनवीर को गेंदबाजी इस वक्त सौंपी गई है और जब कभी भी बिल्कुल सही बात आपने फरमाया सतीश, जब कभी भी लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन होता है तो गेंदबाज के लिए और फील्डिंग साइड के लिए सिर दर्द पैदा होता है कि फील्डिंग सेटिंग किस तरह से किया जाए, किस तरीके से गेंदबाजी की जाए। और यहां पर वक्त के नजाकत को समझते हुए परिस्थिति के अनुगुण बल्लेबाजी इस वक्त कर चुके हैं। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर मोड़ा और इस बार 1 रन मिलेगा, दूसरा रन मिलेगा और इस बीच गेंद सीमा रेखा पर दर्शक ने गेंद को उठा लिया है और इस चौके के साथ Gori Young Boys are now through to the mega final of this competition to face 5-star Addur in the mega final of this tournament, defeating NM Mangalore in a thrilling encounter by 5 wickets with just 5 balls to spare, and with that victory they are now through to the mega final of this competition. And now the mega final of
Yuvaratna Trophy 2022 is now going to begin within just a short while, which